Hi, everyone, and welcome back to our podcast. Today, it's an honor to have this CA who has been practicing since 1997, 26 years of practice, CA Manish Gadia ji. He is the partner at GMJ. So, first of all, thank you so much, sir, for being a part of this podcast. Thank you. Thank you, Pari, for inviting me here and giving me this opportunity to interact with maybe many young chartered accountant through you. So really great, and thank you. Thank you so much. So it won't be a very good respectful thing कि आप please मैं आपको इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती प्लीज आप अपने जर्नी के बारे में बताइए एज अ सीए 1997 वाओ So I became CA in 1997 and then started my own practice. And as you know that when you are new, so you do not know what to do and क्या करना है और क्या नहीं करना है. So then I started practicing in all the areas. जो मिलता गया काम लेते गए. Then some point of time I realized it is not a good thing that we should eat everything. So we have to be selective while whatever services you want to provide. So in the year 2003, I decided that I will practice only in one area of practice, that is at that point of time service tax. So I started my journey in and at that time maybe not more than 10 to 15 CAs were practicing in service tax in Mumbai. So maybe you can say a big risk at that point of time, but I took that risk and it really paid off me. In 2001, I joined a firm, a 1986-year-old, the firm which was established in 1986. I joined that firm, GMJ and Company, what you mentioned, as a partner. And since then, I'm continuing. And I have maybe trained, you can say, more than 15,000 chartered accountant as far as GST itself is concerned. I'm not talking about service tax. I took more than 250 lectures in service tax and more than 350 sessions I have taken in GST till now. So various book I co-authored as far as service tax and GST is concerned. And apart from that, I was chairman of WIRC of ICAI, which is the largest regional council in the year 21-22. So this is all from my side. Wow, this is such an inspirational journey. And the best part, what I really like from the conversation ki itne, early stage pe jab ye concepts bhi pata nahi tha कि, you have to specialize. 2003 mein you understood the importance of this, and I think that's one of the reasons that you've grown so much. And we all know your contribution towards, like you said, GST 350 lectures. And I have personally seen him, running here and there, and the amount of contribution that he's done for the CA fraternity and even other professionals, imparting कि GST होता क्या है जब किसी को पता भी नहीं था. There were so many questions. I really admire you for that, the amount of contribution you've done. So first of all, thank you for that. So we have, like you said, आपने IDT को इतना बढ़ाया, indirect taxation में अपना career इतना बढ़ाया. आगे फ्यूचर कैसा है IDT का? अगर जैसे अभी GST को भी अब 5 साल हो गए, but आगे IDT का as a practicing CA, what is the future that you see? See, I will see any area in which you specialize or any area in which you practice is really good. But ये है कि आप उस चीज में महारत हासिल करें, किसी भी चीज को आप जी जान से करें, सो कहीं पे भी इशू नहीं है, ग्रोथ अच्छी है. GST ऑलरेडी 6 साल हो चुके. 1 जुलाई 2017 को गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था. Now in August 2023, and since my experience is that maybe either service tax or you can call it now GST is actually a transaction based tax, and each transactions
are different from others. So a same company doing a business with the same client or maybe same customer, but two different transactions are different. Tax implications also. Right. That need to be understood. Hmm. And nowadays, if you see any single contract runs into crores and crores of rupees, and if you just see the tax amount 18%, which if you plan today correctly, then you have to you can be able to recover from the client. Nothing goes from your pocket. But if you have not planned, then everything goes from your pocket, or maybe you have to shut down the shop. So the planning area, as I say, is really, really very huge. Planning or giving the correct guidance to the client what to do. That is the first. And then second, as I said, it is a newer law. 6-year-old baby. तो 6 साल के बच्चे को तो क्या है अभी हम केजी में भेजते हैं. So it is at that stage. Right. So lot of litigation I'm going to see in future. And एक होता है कि जैसे आप भी स्कूल में थी, तो स्कूल में हम एक चीज पढ़ते थे, subject which is called history. So we read history. We used to read about Gandhi ji, Nehru ji, or maybe some other legend, and we think कि उन्होंने कितना अच्छा काम किया. Correct. Right. Now we are at the stage that we can also create a history. Wow. In GST, so that in future आने वाली generations उसको देखें कि इस लॉयर ने या इस सीए ने ये केस लॉ अटेंड किया और उसको इस तरीके से इंटरप्रेट किया. सो पीपल मे एडमायर यू और पीपल मे टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम यू. तो यू आर एट दिस स्टेज एज फार एज जीएसटी इज कंसर्न. वाओ, कितनी फ्यूचर इज रियली वेरी ब्राइट, आई शुड से. फ्यूचर इज इन फैक्ट ब्राइट. जैसे आपने बोला, ये बहुत ही नेसेंट है, मतलब अभी जस्ट बेचारा उगा है. सो अभी तो उसको ट्री बनने में बहुत टाइम है. एंड आई एम श्योर जब भी जीएसटी की बात होगी हिस्ट्री में, आपका नाम तो डेफिनेटली आने वाला है. दैट तो आई डोंट नो, बट लेट्स सी. नहीं, ऑफ कोर्स यू आर क्रिएटिंग अ लेगेसी, एंड जो भी आपका कंट्रीब्यूशन है वो ऑफ कोर्स याद रहेगा. सो 27 years ऑफ एक्सपीरियंस आपने अगर मैं ऐसे बोल सकूं जनरेशंस देखे हैं, है ना? तो वो प्रैक्टिस कैसा चेंज हुआ है? मतलब व्हाट इज द चेंजेस हैव यू सीन इन द वे सीएस आर ऑपरेटिंग, या तो सीए फ्रेटर्निटी जैसा है, क्या क्या चेंजेस देखे आपने? सो आई विल स्टार्ट. जब मैं पहले दिन आर्टिकलशिप जब मेरी शुरू हुई in the year 93, so my boss principal told me, you go to that client, our team is there and they will guide you, आपको क्या करना है. So मैं गया. So senior थे, तो senior ने बोला चलो अच्छा है, नया आया है बंदा. So now you do casting. So you know what is casting, Pari? Have you done in your lifetime? So that was my first entry to the CA profession, or whatever you can call it. So that point of time we used to have that red खाता बही जिसको कहते हैं, वो होती थी. और उसको खोलने के लिए आप टेबल पे नहीं खोल सकते थे, क्योंकि उसके लिए आपको वो क्या बोलते हैं, गद्दा और तकिया वही लगता था. उस पे बैठ के ही आप काम कर सकते थे, इतनी बड़ी वो होती थी. So the first job what an article has to do in any firm at that point of time was casting. And I still remember that it was a listed company. And उसका जिस दिन ट्रायल बैलेंस टैली हो गया, तो दैट टाइम द मैनेजमेंट हैज होस्टेड अ बिग पार्टी. सो अगर मैं आज की तारीख में बात करूं कि भाई ट्रायल बैलेंस टैली, तो एनी सीए स्टूडेंट और एनीबॉडी विल से यू आर जोकिंग और व्हाट, इट हैज टू बी टैलीड. So these are the basic changes what we have seen, that 97 से लेके आज तक जो कंप्यूटराइजेशन हो गया. In 2000 and Y2K was there, and जब कंप्यूटराइजेशन हो गया तो there was hue and cry कि कंप्यूटर आएगा तो सीए क्या करेंगे, there will not be any job for us. But I have seen that शायद उस टाइम पे नंबर्स जो होंगे 35,000 40,000 नंबर रहे होंगे सीएस के, बट आज की तारीख में 3.5 लाख सीएस हैं across the globe. And I have not seen a single chartered accountant who is unemployed till now. So there are always a job.
Another thing what I have seen the change is in the trust. So when I started a practice, तो जब तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी, नया नया प्रैक्टिस शुरू किया, तो एक क्लाइंट आया था. So he want to discuss about wedding of his son, कि ये 2-3 सर बायोडेटा आए हैं, तो कौन सी लड़की होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए, कैसे करना चाहिए. तो जब तो मेरी भी शादी नहीं हुई, तो that type of trust client used to have on the chartered accountant. So not only related to accounting, taxation, finance, but related to family matters also. They always treat chartered accountant as their family member. Right. But now we can't imagine all these things. So, but we have to change ourselves according to the time, and I strongly believe that only one thing in this world is constant, and that is change. And unless you adopt the change, you will be out. So you have seen various companies also, maybe like a Kodak movement, whether you शायद तुम्हारी शादी हुई तब शायद कोडेक कैमरा था. तो अगर कोडेक नहीं होता, फिल्म नहीं होती, तो वो मेमोरी नहीं होती. बट आज की तारीख में हम बोले तो so all these things are there. Maybe the ambassador car you can see. So Right. definitely you have to change yourself. वेरी नाइस. एंड जो आपने एक चीज बोली, पता है, जब कंप्यूटर का भी आया था एंड लोग इतना डर गए थे कि जॉब्स चली जाएंगी एंड दिस एंड दैट, देयर वाज सच अ बिग होहा. आज भी वही हो रहा है कि अरे एआई आ जाएगा, सो सीएस का काम चला जाएगा, देयर विल बी लॉस ऑफ जॉब्स इन दिस एंड दैट. ऑफ कोर्स मतलब ऐसा नहीं होगा, बट कमिंग फ्रॉम, आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि आपका क्या थॉट प्रोसेस है इस पे. See, definitely, जैसे मैंने कहा कि one thing is constant in this world is change. Right. So definitely artificial intelligence आ गया है. और आज भी हम देखते हैं, आज से 5 साल पहले भी हम देखते थे कि हमारे पास जो क्लाइंट आता था, सो वो हमेशा गूगल ज्ञान करके आता है. उसका कोई भी इशू है, वो उसको गूगल पे डालेगा, उस पे 5-6 जनों के उसको व्यूज मिल जाएंगे, वो लेके हमारे पास आता है. So we have to be more updated than what the client are. Same thing is, unless you will improvise yourself, it will be difficult for you now to be into practice. So I personally believe that definitely some threats are there, but really if you work hard, then it will not be a threat, because any computer, any machine, any artificial intelligence cannot beat the human mind. The human mind is so powerful that unbeatable. True. You have to be more focused now. And that creativity aspect, that human strategy wala part will always be there. That will be the big differentiator in what a computer can do for you and what a human CA can do for you. Absolutely, because being a chartered accountant, I know my client, I know the appetite of my client, risk appetite you can say. Wow, very इसके लिए क्या बढ़िया है. You बराबर. can't give a same shirt or same cloth to each and everyone. हर एक को उसके फिट के हिसाब से लगता है, तो that human only can give it. वाओ, कितने कितने अच्छे तरह से आपने पुट इन किया कि एक शॉट सबको नहीं जाएगा. सो आपने क्लाइंट के बारे में बात किया, मतलब क्लाइंट जिस तरह से आपको अब आपके पास आता है, क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस में क्या चेंज आई है? मतलब पहले कैसे थे और आज क्लाइंट आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है एज अ प्रैक्टिसिंग सीए? सी, आज सबसे पहले हमको ये समझना है कि स्टेक बहुत बड़े हैं. और आज की तारीख में क्लाइंट ये नहीं चाहता कि आप जो है उसका कंप्लायंस सिर्फ करके दे दें. वो चाहता है कि यू शुड गिव सम वैल्यू एडेड सर्विस. हाउ यू कैन सेव मनी फॉर हिम, how you will get money for him, how you can be instrumental in growing his business. So now he is not only looking as an auditor, maybe as an accountant, or may not be as an only a tax consultant. Right. उसको चाहिए कि आप मेरे बिजनेस कंसल्टेंट कैसे हो सकते हो और मैं कैसे बिजनेस को ग्रो कर सकता हूँ. सो वो सब जो क्लाइंट को चाहिए. और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में भी हमने डिस्कस किया कि भाई वो शादी का भी डिस्कशन करने आता है, but now client will not come. Now you have a pure professional relationship with your client. So client expectations are changed, and accordingly you have to work on the same.
and give the best of your services, give your 100% to the client. Fantastic. So client को extra चाहिए and they don't want a normal, package for everybody. They want customized things. Absolutely. Right. And आप GMJ के इतने साल से part है and you have been very, very, if I can say, instrumental in the growth. So what aspects have helped you grow as a practicing CA and even help your firm grow? क्या मदद किया है आपको? सबसे पहले हमको ये समझना है कि जैसे हम अगर किसी भी रिलेशनशिप में हैं, so you have to compromise. Whether there is a relationship between son and father, husband or wife, every time, both the partners, both have to compromise. Right. So if you are into practice, so nowadays days are gone that you can practice as a proprietary concern. You have to have a partnership firm, and you have to have a big firm. Then only you can grow. So if you want to be a big firm, then partners are also like your spouse. So जैसे आप अपने वाइफ पे या अपने हस्बैंड पे ट्रस्ट करते हैं, आपको आपके पार्टनर पे ट्रस्ट करना है और आपको उसी तरीके से उसको कॉम्प्रोमाइज करना है. ये नहीं हो सकता है कि आप बोले सब काम मैं ही लेके आ रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, तो उसका क्या कंट्रीब्यूशन है. बिकॉज वंस यू ग्रो, so various work what we have experienced will come because of your profile, because of your size, not because only one partner. Okay. That everybody has to understand. Second thing is that you should not look at the percentage what you are taking. I personally believe that before joining firm, suppose if I am taking X, after that if I am taking X plus something, then also I am a winner. So ये सबसे जरूरी है. And you should always focus on newer areas of practice, because what new thing you can add into your vertical, into your firm, and what value addition you can give will definitely give you a growth. And second is the quality of service. I will say never compromise on the quality of service. You can't say that this client has given me a lesser amount of fees, less fees, that's why this quality was given. It is not acceptable at all. So your deliverables has to be there, your quality of service has to be there, then only you can grow. So true. Quality पे तो we can never ever compromise because ours is a service based. वही हमारा core है service. अगर service पे ही हम कम कर देंगे, we always have to give 200% in a service, चाहे वो आपका payout फिर कैसा भी हो. Yes, because quality. हाँ. And I have seen that if you give a good quality service, nowadays client won't mind paying fees also. Right. How you demand, how you put yourself, what is your class of service, it all depend on that. Right. And what is happening is I'm in touch with a lot of young CAs and I see this hesitance ki, "Arey ma'am, how should we start practice? I should be first working in some firm or, working in some corporate, somewhere I get experience, I get network, only then should I start a practice." They're very, very scared. What do you have to say about this? Practice, I will say it's like a egg and chicken story. So, so अगर मैं देसी भाषा में बात करूं तो सबसे पहले तो आपके पास कोई क्लाइंट होना चाहिए टू स्टार्ट अ प्रैक्टिस. अगर आपने दुकान लगा के बैठ गई और आपके पास कोई ग्राहक ही नहीं है तो आप क्या करोगे? So definitely I will not say that you should not take any experience, because experience is definitely will help you, because आज की तारीख में क्लाइंट जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा वो आएगा भी नहीं. तो आप बोलोगे मैं नया सीए हो गया हूँ तो और मैंने ऑफिस खोल ली है तो यू गिव मी वर्क, तो nobody will give. So you have to have some experience. Then you should have at least some sizable 2 or 3 or 4 client जो आपके at least घर खर्च को
टेक केयर कर सके, Very nice. देन यू शुड स्टार्ट अ प्रैक्टिस। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है कि ओवरनाइट आपको कोई भी पैसा प्रैक्टिस में बनने वाला नहीं है। You have to have some patience, because I have seen that a new generation, आज मुझे तो 10 ये होते ही 10 लाख रुपए का जॉब ऑफर मिल गया है, तो मुझे तो 10 लाख प्रैक्टिस में नहीं मिल रहा, तो मैं क्या करूं, तो वो नहीं हो सकता है। बराबर। So then you have to have that kind of mindset, that you have that patience. And once you start your practice, it is very important to have a regular meeting with the client. Regularly you should update to the client, and you should focus more and more on the value addition instead of giving a compliance services to the client. More and more focus on newer areas or value addition. वेरी नाइस। एंड जब हम ये ग्रो कर रहे हैं प्रैक्टिस, अगेन काफी सीएस थोड़ा सा हेसिटेंट होते हैं टू इन्वेस्ट इन अ लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे हम बोले टेक्नोलॉजी है, या तो फिर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, या तो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सब चीजें थोड़ा सा बैक हैंड पे चली जाती है। ये सब चीजें क्या इंपॉर्टेंट होती है, एंड व्हेन कैन अ सीए थिंक अबाउट इन्वेस्टिंग इन ऑल दीज एस्पेक्ट्स? I will just say that when I started my practice in 97, तो उस टाइम पे क्या होता था, एक 1100-1200 रुपए की एक्वालेक की बैग आती थी, ओके। ब्रीफ केस टाइप, हाँ 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 हाँ। अगर आपने देखा हो। हाँ। और एक 100 पेज का हम लेटर हेड छपा लेते थे, 100 रुपया उसका लगता था, और एक 30 रुपए का रबर स्टैम्प। हाँ हाँ। कुल मिला के 1200-1300 रुपए में आपकी ऑफिस शुरू हो जाती थी। बट आज की तारीख में ऐसा नहीं है। यू नीड अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, good admin team. You have to definitely invest in technology, because now everything is technology based. You have to have a good computer system, good softwares. If you are practicing in tax, तो आपके पास law sites होने चाहिए where you can do your upgrade yourself. So all these investments are definitely have to have, otherwise it will be difficult to grow in the practice. Because as I said, the client will always come to you with Google Gyan. And if you will give only Google Gyan, the client will not come to you. You have to have something more than that, what is not available on the Google. वेरी नाइस। दीज आर काइंड ऑफ खर्चा नहीं, इन्वेस्टमेंट जो आपको चाहिए ही, मतलब ये हमारा कैपेक्स हो गया कि ये तो चाहिए ही हमको। और अभी जैसे हम अगर बात करते हैं, बिकॉज आपका आईटीटी में इतना एक्सपर्टीज है, फॉर यंग सीएस हु आर जस्ट स्टार्टिंग, और समझो 5-6 साल भी है अगर, वो जीएसटी में कैसे एक्सपर्टीज ले? व्हाट शुड दे बी डूइंग टू स्टार्ट स्पेशलाइजिंग इन जीएसटी, या कोई भी एरिया ऑफ प्रैक्टिस है, कैसे स्पेशलाइज करें? तो सबसे पहले तो उसका माइंडसेट होना चाहिए, मुझे यही एरिया में स्पेशलाइज करना है। Then 2-3 years he should take a training, or maybe undergo with the expert in that particular area. So he will have some experience in that particular subject, or maybe a command. And उसके बाद definitely hard work तो है ही है। Whatever practice you are doing, continuous reading आपका जरूरी है। Without that you can't be able to upgrade yourself, update yourself. So continuous study, hard work is must, and definitely networking. Without networking, you can't do anything, because you have to meet various people. You have to update. You have to attend the various seminars, whatever are. So where you will get the opportunity to hear to the great personalities also. At the same time, you will get the opportunity to meet various other people also. और मैंने देखा है कि हर व्यक्ति जो जिससे भी हम मिलते हैं, वो हमको लाइफ में कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। So that you have to be always open to hear others and to learn from them. वेरी नाइस। और ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है, नेटवर्किंग, जो अगेन बहुत ही अंडररेटेड टर्म है सीए कम्युनिटी में। और काफी लोगों को ऐसा लगता है कि हम स्टडी सर्कल अटेंड कर रहे हैं, या तो फिर ये वेबिनार्स इवेंट्स अटेंड कर रहे हैं, तो हम नेटवर्किंग कर रहे हैं। बट नेटवर्किंग काफी अलग होता है। इट्स नॉट ओनली अटेंडिंग, इट्स अ वन स्टेप फॉरवर्ड वेर यू टेक
forward things. So how has networking helped you, and what is the importance of networking जब हम बात करते हैं एक practicing CA के नजरिए से? मतलब of course knowledge yes, उसके अलावा. See, whenever you meet, as I said, कि everyone teaches you something. So वो आपके लिए important है. Then networking में दूसरा ये होता है कि दुनिया में क्या चल रहा है. अगर suppose if you are attending any conference, maybe on pharmaceutical, what is happening in that industry may not be only from the tax perspective, but what is happening, going on that industry, what difficulties they are facing, what solution you may have. So all this will definitely help you to grow your practice as well as to learn something more. So networking के बिना तो कुछ कर पाना मुझे नहीं लगता है कि possible है. And I have seen that CAs are really very shy. आज 2-3 साल में मैंने देखा है कि जो CA आ रहे हैं, they are not so shy. So they are forward looking. So the old CAs like me have to have little bit open up, and they have to invest some time for networking also. Very nice, sir. आप तो networking कर लेते हैं directly, indirectly, and I think your experience as the chairman of WIRC actually mattered a lot. So what did you learn or what did you gain when you were the chairman of WIRC? So as a chairman, or whenever you are heading any institute or any association, you will always get various opportunities to learn. So the first thing what I learn is how to manage people. Because once you are doing any honorary job, so any people who come to you or come to your office will always have some grievance. और उसको ये लगता है कि उसके साथ बहुत कुछ injustice हुआ है. So to convince him that injustice नहीं हुआ है, and how you can help him out. So I can say in nutshell, to manage people or to handle people, that is what you learn in any of the any honorary post if you go. So this is the good opportunity to handle. How to get your work done from others is also very equally important. Right. Because you can't do each and everything. So this will also help. And for going to WIRC, my main reason was giving back to the profession, because the CA is, as of now also, the cheapest and the best professional course across the globe. Agree. So actually तो बिना पैसा लगाए हम CA बन जाते हैं, क्योंकि स्टाइपेंड इतना आ जाता है. बराबर. So इसके लिए जो भी हम अपने इंस्टीट्यूट के लिए, हमारे प्रोफेशन के लिए हम कर सकें, उतना कम है. Or because whatever I am getting today, or any chartered accountant are getting today, maybe salary, maybe remuneration, maybe whatever he is getting, is only and only because of a chartered accountant, because he has done this course. Right. And जैसे जैसे हम देख रहे हैं people, and पिछले 3-4 साल से we've seen the institute also becoming very aggressive in the terms of connecting back to the students है या members है, उनके साथ connect करना, उनको again लेके आना on the field, and we are seeing that growth. But still I feel थोड़ा सा और अगर हम as CAs members we can contribute and we can be a strong community, it will really help. इंस्टीट्यूट को तो ऑफ कोर्स हेल्प होगा, बट सीए एज कम्युनिटी को बहुत हेल्प होगा, राइट? ये नेटवर्किंग से बिल्कुल होगा. अगर आप देखते हैं, so if you go to any other educational institute, so if you are going for a job where the alumni of that institute is sitting on the top post, so he will definitely hire his alumni, right, not the other one given an opportunity, right. So that feeling is still not there with the chartered accountant. So we have to have that feeling that another CA is also my professional colleague. He also belongs to the same school where I also learned. So I should help him, whatever way I can help him.
That should be the approach, and definitely it will help the profession to grow, and respect of the chartered accountant will also increase. So we will look like a single community. Very nice. And uh, I like to share something which is my observation. And because you have such a vast experience, I don't know if आपने notice किया है या जैसे भी, today's generation, there is some gap in the understanding of what hard work is. So our understanding of hard work was very different. We actually didn't mind grinding and working that extended hours or giving those 17 18 hours a day, wo bhi chalta tha humko. But today the scenario is changing where the youngsters, the young CA that are coming, they don't want, or they have a different idea about hard work, or how much do I need to work or should be working. तो क्या आपने भी ये चेंज देखा है? सी मैं पूरी तरह से नहीं सहमत हूँ, हाँ हाँ क्योंकि मैंने देखा है बीइंग ए चेयरमैन ऑल्सो, और बाकी भी मैं जो देख रहा हूँ आसपास में। सो एक बच्चा है, सुबह अपने घर से 6 बजे निकलता है, कॉलेज जाता है, 10 साढ़े 10 बजे तक कॉलेज अटेंड करता है, फिर अपने प्रिंसिपल के यहाँ आता है। हम उसको डांटते हैं, डपटते हैं, जो भी है, जिस तरीके से भी उसको ट्रीट करते हैं, उसको कुछ सिखाते हैं, वो बेचारा 6 बजे 7 बजे 8 बजे तक हमारे यहाँ पे बैठा रहता है। उसके बाद वो बेचारा बच्चा क्लासेस जाता है, तो रात को 10 बजे घर पहुंचता है, 10 बजे 11 बजे, आई डोंट नो, क्योंकि बॉम्बे में तो ट्रैवलिंग टाइम भी बहुत है। राइट। और उसके बाद फिर सुबह 6 बजे उसकी जर्नी शुरू होती है। सो और उसके बाद भी वो बीच में समय निकाल लेता है ट्रेन में या जो भी है, तो उसमें भी उसको अगर आधा एक घंटा मिलता है तो वो भी उसमें कुछ ना कुछ रीडिंग करने की कोशिश करता है। सो दे आर स्टिल डूइंग हार्ड वर्क, एंड नाउ आई हैव सीन दैट स्टूडेंट्स और यंग सीएस आर वेरी फोकस्ड। दे नो कि मुझे कहाँ पे हार्ड वर्क करना है और कितना हार्ड वर्क करना है। हमारे टाइम पे वी वर नॉट सो फोकस्ड, तो हमको लगता था सिर्फ हार्ड वर्क करना है। बट आज की जनरेशन को दे नो कि कितना हार्ड वर्क करना है और किस डायरेक्शन में कितना करना है। मतलब उसको ऐसा नहीं कि 100% मेरा देना है, अगर मेरा 80% देने से काम हो रहा है तो दैट इज मोर देन इनफ। सो माय सन ऑल्सो से, पापा मुझे कितना लाना है? 80 लाना है ना? ठीक है। मुझे 90 लाना है? अच्छा ठीक है, तो मेरा 90 आ जाएगा। तो उसका फोकस है कि उसको 90 लाना है, उसको 91 भी नहीं लाना है, 89 भी नहीं लाना है, और वो 90 लेके आता है। सो वेरी दिस नाइस, इज वेरी व्हाट माय वेल पुट। एक्सपीरियंस। थैंक यू फॉर दैट थॉट कि दे वेरी स्मार्ट, मतलब हार्ड या वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क में बिलीव करते हैं। दैट्स फेयर इनफ, जब तक यस। का गोल अचीव हो रहा है तो ठीक है, इट्स ओके। एंड अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा टॉप 3 स्किल्स है जो किसी भी सीए में होना चाहिए, व्हाट आर दोस 3 स्किल्स? First, I will say hard work, or maybe a smart work, what you said now. That is very much necessary. Second thing, I will say the honesty, because you should not cheat your client. You should not कहीं पे भी कुछ आपको गलत नहीं करना चाहिए. The honesty is the best thing, and you have to update yourself. This is the three qualities has to be there. वाओ, बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज है, मतलब वन इज टेक्निकल, वन इज ऑन आवर सेल्फ, वन इज फॉर अदर्स। सो बिल्कुल। थैंक यू सो मच। ये होता है एक्सपीरियंस का खेल। और सर, टुवर्ड्स द एंड, अगर you want to share something, or you want to share something for the CA community, आप उनके लिए कुछ बोलना चाहते हैं? So I will say that you should work. First of all, you should believe in your institute, because I have seen that a newer chartered accountant, maybe last 5-10 years, they are not connected with the institute. They do not know what is happening. एंड जो मैं 2 साल पहले सीए चेयरमैन भी था, तो लोग वही इशू लेके आते थे जिस इशू पे ऑलरेडी इंस्टीट्यूट ने डेलिब्रेट करके उसका रिजोल्यूशन दे दिया, बट दे आर नॉट अवेयर. तो फर्स्ट इज दे शुड बी कनेक्टेड विद द इंस्टीट्यूट, राइट, बिकॉज इट इज योर इंस्टीट्यूट एंड यू बिलीव इन योर इंस्टीट्यूट. कि इंस्टीट्यूट कुछ नहीं करता है ऐसा नहीं है. जहाँ पे जितना पॉसिबल है, इंस्टीट्यूट इज हियर टू गिव यू बैक.
So you Right. believe in your institute. That is the most important thing what I want to communicate to the chartered accountant. So, and CA is the name of the trust. On 1st July 2017, our Prime Minister Narendra Modi ji has said that the signature, the value of the signature of the chartered accountant is more valuable than the signature of the Prime Minister. So Yes. it is a very, very big statement, and we have to respect that. The entire society, entire fraternity, entire business community look at us as a trust. So we should carry that trust, जिसके ऊपर की हमको कभी शर्मिंदा ना होना पड़े. So that is what my request to all the chartered accountant, that इसको ऊपर लेके जाना या नीचे लेके जाना वो आपके हाथ में है. Wow. Thank you so much. That actually is something which is very, very important. जो institute से जुड़े रहना बहुत जरूरी है for all the reasons. But हाँ, and ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ कि इंस्टीट्यूट इन फैक्ट इज डूइंग अ लॉट फॉर द मेंबर्स. यू जस्ट हैव टू बी अवेयर कि क्या क्या चल रहा है, एंड आई थिंक इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज मेंबर्स टू बी अवेयर. सो रेगुलरली अपडेट लेना, साइट पे जाना, टॉक टू पीपल. आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. in fact जैसे some time back I was just talking to one of the CAs. She was not aware even about the networking firm concept that the CA has come up with. तो मतलब awareness नहीं है, but वो responsibility भी हमारी है कि हम थोड़े steps लेके we start knowing, we start talking to people, तभी हमें वो awareness आएगी. I think वो नहीं आने वाली ऐसे ऊपर से कहीं से. So thank you so much, Manish sir, again for your time and for your valuable inputs. एक एक चीजें जो आपने बोली है आर जस्ट प्योर, इट्स अ ट्रेजर हमारे लिए. सो थैंक यू सो मच. होप वी गेट यू बैक सून और हम और थोड़ी टेक्निकल बातें भी कर सके. सो थैंक यू अगेन. Thank you, and it's my pleasure to talking to you anytime. थैंक यू सर. थैंक यू. Thank you.